हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक से इंग्लिश वोकैब। इस इंग्लिश वोकैब में हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनका हमारा वीडियोस चल रही है। आज हमारा इडियम और फ्रेजेस का थर्ड तो हो चुका, फोर्थ डेली डोज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम फोर्थ है इसलिए 301 से 400 तक कंप्लीट करेंगे। हम 100 डेली, हर डोज में 100 इडियम फ्रेजेस और 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 सिनोनिम एंटोनिम्स कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 300 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 301। बियॉन्ड द पेल, अस्वीकार्य, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इज बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट, संदेह की छाया से परे, निश्चित रूप से, विद सर्टेनली, फॉर श्योर। इसमें यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो ये रिपीटेशन दिखा रहे हैं कि एसएससी एग्जाम में ये पर्टिकुलर इडियम या फ्रेज कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जिस पे ज्यादा रिपीटेशन है या फिर जो बोल्ड मार्क्स किए हुए हैं, मतलब हाईलाइटेड किए हुए हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उनको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इज बिट डिफाइनेंस, डिफाइंस, आज्ञा का उल्लंघन करना। टू डिसएग्रीड, recklessly, to ignore, to offer resistance. Next is bit fair, to seem likely, संभावना लगाना। Big bucks, मोटी रकम, to a lot of money. Next is birds of the same feather, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समान चरित्र के लोग। Persons of same character or interest, similar in many ways. Next is bite of more than one can chew, मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम कर लेना। टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट इज बाइट समवन्स हेड ऑफ, बेवजह गुस्सा करना। स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीजन, रिस्पॉन्ड्स टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफ्टन सडन और अनप्रोवोक्ड। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, मजबूरी में स्वीकार करना। टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, टू गेट समथिंग ओवर बिकॉज इट इज इनएविटेबल। नेक्स्ट इज बाइट द डस्ट, धूल चाटना या फिर हार जाना, धूल चाटना या हार जाना। सफर अ डिफीट और डाई। नेक्स्ट इज बाइट योर टंग, कुछ कहने से खुद को रोकना। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अवॉइड टॉकिंग। नेक्स्ट इज ब्लैक एंड ब्लू, चोट या मारपीट के कारण नीले काले निशान होना। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली बरीश्ड, टू मीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली मतलब बिना दया के पीटना। नेक्स्ट इज ब्लैकआउट, बेहोश होना। लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स होश होता है। नेक्स्ट इज ब्लैक ऑक्स, दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून। आपने ये स्पेलिंग्स इसमें जितनी भी मेंशन है उनको भी अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि एसएससी में स्पेलिंग्स भी आती हैं कि विच स्पेलिंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको हेल्प रहेगी। नेक्स्ट इज ब्लैक शीप, कुल कलंक, बुरी प्रतिष्ठा वाला। वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, पर्सन विद बैड रेपुटेशन। नेक्स्ट इज ब्लेज अ ट्रायल, नई राह दिखाना। टू लीड द वे एज अ पायनियर, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। नेक्स्ट इज ब्लाइंड अलाय, आगे का रास्ता ना मिलना। A situation in which no further progress can be made. Next is blow a fuse, आग बबूला होना। To react with angrily, to react very angrily, बहुत गुस्से, मतलब blow a fuse, जैसे फ्यूज हो जाना घर का, ऐसे समझ लो। Blow is stop, बहुत गुस्सा होना, be very angry. Next is blow one's own trumpet, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। Praise oneself, talk boastfully about oneself, to boast about their achievements. Next is blow over, बीतना या गुजरना, pass off. Next is blow someone out of proportion, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। Behave as if something that has happened is much worse than it really is. Next is blow up, विस्फोट करना, to destroy by an explosion. Next is blue blooded, of clean, of noble birth. Next is
Bob's your uncle. It becomes easily and quickly achieved. काम आसानी से हो जाना. Body and soul. जी जान से पूरी ताकत से with all your energy. Boil the ocean. पानी में आग लगाना. असंभव कार्य करने की कोशिश करना. Undertaking an impossible chore or task. Boils down. संक्षिप्त करना. Sum ups to. Next is bone to pick. फसाद की जड़, झगड़े का कारण, cause of quarrel. To be angry about something and want to discuss it. Next is born with a silver spoon in mouth. अमीर परिवार में पैदा होना. Be born in a rich family. Next is bosom friend. करीबी दोस्त, close friend. Next is bottom line. The most important fact, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य. Next one is bounce something off something. किसी विचार को किसी से साझा करना. Discuss ideas with someone to get their views. Next is breach of confidence. Breach of faith means विश्वास तोड़ना. Next one is bread and butter, bread and cheese. जीविकोपार्जन, मूलभूत जरूरत, means of livelihood, a person's livelihood or a main source of income. Next is break a leg. भाग्य साथ होना. To wish good luck, perform well. Break in, बलपूर्वक प्रवेश करना. Force entry or entry a building illegally. Next is break new or fresh ground. नई खोज करना. Do or discover something new. To innovate or pioneer. Next one is break the bank. बहुत महंगा होना. To be very expensive. Win more money than is held by the bank. Break the ice. चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना. Initiate something to start a conversation. To make someone comfortable. To break a painful silence. Next is breath of fresh air. नया और स्फूर्तिदायक. Someone or something new and refreshing. Next is breathing down someone's neck. निगरानी रखना. Watching all his actions closely. Next is breathing the air. Useless task. बेकार के काम. Bring about. Cause to happen. किसी चीज के होने का कारण बनना. Next is bring home the bacon. सफल होना, पैसा कमाना. To be successful. To earn money. Next is bring someone to book. दंडित करना, स्पष्टीकरण मांगना. To punish someone for wrongdoing, held accountable. Next is bring the house down. दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना. Made the audience applaud enthusiastically. Bring to one's knee. घुटनों पर लाना, हार मनवा लेना. To force to submit. Broke alliance with. विरुद्ध बहस करना. To argue against. Broke down. टूट जाना. Wept bitterly, cried. Broke off. अचानक रुक जाना. Suddenly stopped. Broke prescience head. खराब व्याकरण का उपयोग. To use bad grammar. Broke up संबंध तोड़ना. Disbanded itself. Broken reed विफल समर्थन. Support that failed. A weak person, someone or something to fail to provide support. Next is brought up. चर्चा के लिए पेश करना. To introduce for discussion. Next is brown study. ध्यान में डूब जाना. A mood of deep absorption or thoughtfulness. Revire. Next is bugs me. परेशान करना. Irritates me. Next is build castles in the air. हवाई किले बनाना. असंभव सपने देखना. Daydream, have unrealistic ideas to create impossible dreams or hopes. Next is bull's eye. तोते की आंख, लक्ष्य का केंद्र. Something that is the center of a target. Next is burn one's bridges, boats. पिछले लौटने के सभी रास्ते बंद करना. To destroy all relation. To make it impossible to return to the previous situation later. Next is burn the midnight oil. दिन रात एक करना, देर रात्रि तक काम करना. To work or study till very late in the night. To work very hard.
बर्निंग क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इशू. नेक्स्ट इज बरी द हैकेट, झगड़ा खत्म करना. टू मेक पीस, टू एंड अ quarrel. नेक्स्ट इज बटन, दखल देना, इंटरप्ट. बटर फिंगर्स, अनाड़ी व्यक्ति. टू बी क्लमजी, बटरफ्लाइज इन द स्टोमच, घबराना. टू बी एंशियस और एंड नर्वस. नेक्स्ट इज बटन हर लिप, जबान पर ताला लगाना, बातचीत बंद करना, स्टॉप टॉकिंग. नेक्स्ट इज बाय अ लेमन, एक खराब या दोषपूर्ण वस्तु खरीदना. टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू. नेक्स्ट इज बाय अ विस्कर, बहुत कम अंतर से. बाय अ स्मॉल मार्जिन. नेक्स्ट इज बाय एंड बाय, धीरे धीरे, ग्रेजुअली. नेक्स्ट इज बाय एंड लार्ज, सामान्यतः. इन जनरल, ऑन द होल. नेक्स्ट बाय कर्सरी ऑफ, सौजन्य से, गिवन और अलाउड इट बाय, विद काइंडली कंसिडरेशन. नेक्स्ट इज बाय फेयर मीन्स और फाउल, किसी भी तरह से ईमानदार या बेईमान. इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से. अनस्टडी, इरेगुलरली. बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके. बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, यूजिंग व्हाटएवर मेथड आर necessary in whatever way one can. Next is by leaps and bounds, दिन दोगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से. very quickly, rapidly, swiftly. by the same token, एक समान तरीके से. in the same way. by the skin of one's teeth, बहुत कम अंतर से. by the narrowest margin, having a narrow escape. to just barely manage to achieve something. by the sweat of one's brow, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क. कॉल डाउन, डांटना. टू स्कोल्ड, कॉल इन क्वेश्चन, चुनौती देना, चैलेंजिंग. कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही. डिसाइड और एग्री, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क और टू बैक टू होम. नेक्स्ट इज कॉल ऑफ, रद्द करना, कैंसिल समथिंग. नेक्स्ट इज कॉल ऑन, मिलने आना, पे अ विजिट. नेक्स्ट द कॉल द शॉट्स, टू बी इन कंट्रोल, टू बी इन द पर्सन, टू बी द पर्सन इन चार्ज, निर्णय लेने का अधिकार होना. नेक्स्ट इज कॉल अपॉन, काम के लिए बुलाना, टू ऑर्डर. नेक्स्ट इज कॉल फॉर, किसी काम के लिए बुलाना, टू रिक्वायर समथिंग आस्क्ड. केम आउट ऑफ इटसेल्फ, अधिक मिलनसार बनना. बिकम मोर सोशलेबल. केम अप, उठना या बढ़ना, बढ़ाना. वॉज राइज्ड. कांट कट द मस्टर्ड, नौकरी करने में असमर्थ होना. टू बी अनेबल टू डू अ जॉब. कैप इन हैंड, इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानजनक तरीके से. कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस. कैरी ऑन, जारी रखना, कंटिन्यू डूइंग समथिंग. कैरी आउट, पूरा करना, कंप्लीट समथिंग. एग्जीक्यूट, कैरी द बॉल, जिम्मेदारी संभालना. बी इन चार्ज, कैरी द केन, गलती से जिम्मेदारी लेना. टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब, मिस डिमीनर, किसी और की गलती की जिम्मेदारी खुद ले लेना. कैरी द डे, जीत हासिल करना. विनर विक्ट्री बिकम्स द विनर. कैरी वेट, महत्वपूर्ण होना, बी इम्पोर्टेंट. क्रेव आउट अ नीचे, महत्वपूर्ण होना, सॉरी, केव आउट अनिश्चय का मतलब होता है अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाना. डेवलप अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ. एंड द नेक्स्ट वन इज कैश स्ट्रैप्ड, पैसे की तंगी. इम्प्रोवाइज्ड, कैश स्ट्रैप्ड मीन्स इम्प्रोवाइज्ड. तो आज के हमारे हुए 100 idioms और phrases कंप्लीट. इस तरह हमारा डेली डोज 4 हुआ कंप्लीट. मिलते हैं आपसे डेली डोज 5 में. तब तक के लिए कीप स्टडी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.